Assalamu alaikum, Sir Afzal, Dr. Shala, both of you are on a co-host here with me in the space. We would begin with Sir Afzal and then would like to listen from Dr. Shala as well. So, Sir Afzal, if you remember, you posted a few posts about sort of food. You did post about, that was a sort of boiled rice and chickpeas and the other plate which I saw. I think I'm not forgetting that was of beans and something like that. So, if you would give us a sort of a brief introduction and a background that what made you change your diet plan and what inspired you, or you were suffering with sort of a disease or a problem that you changed your whole diet plan and then you came up to like a sort of avoiding and cutting out oil and sugar from your diet. So please, you unmute yourself, give us a sort of brief introduction, and then we're going to go to Dr. Shala as well here. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. I am Afzal and अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, अस्सलाम वालेकुम किरण, शरबानो, तला, आप सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक. और thank you very much Kiran for inviting me for this space. It's almost like the closest thing to my heart. That is. उसको मैं good health तो नहीं कहूँगा, but I would call it avoiding self-inflicted injury. So what happened to me was that it was February 2012, and I was working in an organization, and they usually what they do is that there is annual examination before our annual performance. There's the system of it. So in that, I was found out with ischemic heart disease, diabetic, and high blood pressure, and so much more. There were so many other diseases. So for me, there was a choice to undergo medical, interventions, surgical interventions, use of medicine, or getting surgeries for that. But it scared me. And I thought, because prior to that, I had also been doing other things. And I knew that sometime, our thinking about things is not adequate. So I put the same system in action. I took things into my own hand and I started searching. It was like 24 hours or so. I landed onto some of the YouTube videos and some of the contents on internet. And one of those was a video by Bill Clinton, American president. And he was telling CNN along with his doctor, his rather nutritionist, Neil Bernard. And what he was telling that he has undergone double bypass heart surgery, couple of stents has been installed in him. But every time after having the surgical intervention or medical intervention, he used to get himself into again blocking his or injuring his arteries. So that was because of the food he was taking. And then he changed his food and everything started getting all right. That was a great inspiration. Then I kept searching. Within the next 24 hours or so, I landed on to some content by Dr. McDougall, Dr. S. Esselton, his son, and then Dr. Pamela Pamper, and there's so many others. A couple of doctors from India as well, and they all were talking one thing, that there are diseases which are just because of inflammation of arteries, inflammation of our body, and that is because of the wrong choosing of food. So what I did, that immediately I changed my diet. I stopped eating all those parts of food, mainly any kind of fats and any kind of animal parts, its secretions or eggs, etc. So it took me about 48 hours or so to get out of blood pressure.
it took me out of, for my diabetes type 2, 40 days. Say within 6 months, I was again back to hiking, cycling, and other strenuous exercises. The time when I started it, I was unable to even speak. I used to get short of my breath and all. So that really helped me. And till today, I am not on even a single pill. I have not gone through even touching the surgical instruments to my body. I kept on getting my blood chemistry checked for every now and then. But then it occurred to me that if I'm not taking things which can alter my blood chemistry and it can cause, inflammation or injury, so why to even get checked? So there it goes. That's the story. And what I was doing in those days, which I still do the same. Like daily, I have 1 hour odd, space. In that, I cover this part of my knowledge. I have written a book which I have posted above there. It's about art of plant-based diet. So that's how it is. Thank you very much, Kiran. Okay, before that, before asking any question from Sir Afzal, I would want Dr. Shella to share a sort of an opening statement with us. What would she say about good health, and if anything in sort of diet she changed in her life, so she can share. So, Assalamu alaikum, Dr. Shella. Please go ahead if you want to share some. Walaikum assalam, Kiran, Afzal bhai, Farah, Talha. किरण अफजल भाई जो कह रहे हैं ना बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं. मैं भी इनके साथ स्पेसेस की है जिसमें इन्होंने प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मी तो मैं बड़ा नालायक स्टूडेंट हूँ. थोड़ी बहुत कोशिश ज़रूर की है ज़िंदगी में. मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी कोई आज से 10 साल पहले थी. काफ़ी चेंज की है, लेकिन उतनी नहीं की जितनी अफजल भाई कर चुके हैं. तो इसलिए मैं तो चाहूँगी कि अफजल भाई से ज़्यादा गुफ्तगू करें और जो भी वो हमें बताएं उसको एक 100% ना सही तो चले 70-80% तो कम से कम उसके ऊपर हम अमल करने की कोशिश करें. और वाकई इट रियली डज मैटर. जो अफजल भाई हमें बता रहे हैं बिल्कुल इन्होंने तो रिलीजियसली ये प्लांट बेस्ड डाइट के ऊपर शिफ्ट हो चुके हुए हैं. मतलब रिलीजियसली का वर्ड जो है ना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये वाकई ऐसे ही कर रहे हैं. और माशाल्लाह जिस तरह से इन्होंने अपनी तमाम प्रॉब्लम्स पे काबू पाया है और खुद ये अपने आप को पेश करते हैं कि भाई आई एम द पर्सन, आई एम डूइंग दिस, तो व्हाई नॉट यू पीपल. तो उस लिहाज से अफजल भाई से ज़्यादा बातचीत सुनना मुझे पसंद है. और अफजल भाई से ही मजीद जानिए कि ये क्या खाते हैं. और हमारी जो भाभी हैं वो भी बड़ी मास्टर हैं बगैर ऑयल के अच्छे खाने बनाने में. और ये इसकी गार्निशिंग इतनी अच्छी करते हैं दोनों मिलके कि वो दिखने में इतना खूबसूरत लगता है कि वो बंदा फिर उसको खाने पे मजबूर हो जाता है. तो ये बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है. और ये इन्होंने कई दफ़ा हम लोगों के साथ शेयर किया है. तो हम कभी मान जाते हैं इनकी बात और कभी नहीं मानते. लेकिन अगर मान लें तो अच्छा ही है, क्योंकि अब जाहिर है हम लोग भी उस एज में एंटर हो रहे हैं जहाँ पर ये सारी बीमारियां हमारा भी दरवाजा खटखटा रही हैं. तो अल्लाह खैर करे. किसी दिन अल्टीमेटली शायद इन्हीं की बात माननी पड़े, लेकिन फिलहाल सारी नहीं मान रहे हैं. तो आप प्लीज कंटिन्यू करें. थैंक यू. Thank you so much, Dr. Shala, for an opening statement. It was amazing, and definitely we would ask a lot more questions about good health and diet from Sir Afzal, and which I wanted to ask first thing that he changed his complete diet. From, if you just talk about from the that red meat, and even though I am not quite sure, but this is something Sir Afzal would like to share with us. That did you completely quit
red meat and white meat as well, or you do keep those white meat which we call like chicken and of course like fish, and just completely came on, I would say, grains and vegetables and fruits. So what is all about that, if you just can share with us? And of course, like, especially for oil and spices stuff, when you had to change, did you have any sort of difficulty? And of course there would be a weird change in your taste in the beginning. You might not like it, skipping oil completely, skipping spices completely, and just cook that up in water or boil that up in water. So your experience, please, if you'd like to share with us, so that would be great. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. मैंने जैसा आपसे अर्ज किया ना कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हमारे जहन में डॉक्टर आता है, और जब हम फूड की बात करते हैं तो हमारे जहन में न्यूट्रिशनिस्ट आता है. तो इस सफर में मुझे जो ज्यादा चैलेंजेस जो है जब वो दरपेश हुए, जब मैंने इस पे बात करना शुरू की, जब मैंने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की, तो उससे मेरे और भी बहुत सारे रास्ते खुले. मैंने ये देखा कि और जब मैंने खास तौर पे ये किताब भी लिखी जो ऊपर मैंने पोस्ट की है, उस पे देख सकते हैं आप, आर्ट ऑफ प्लांट बेस्ड डाइट. तो मुझे ये लगा कि इंस्टिंक्टिवली इंसान जो है वो हकाइक से भागता है, वो जो है बहस करना चाहता है, और फिर जो है जब बहस करता है, जब वो चीज़ों को लर्न करता है, तो कोई फितरी तौर पे, जिबिल्ली तौर पे हमारे अंदर कुछ फॉल्ट्स हैं, तो वो आड़े आ जाते हैं. एक तो ये है कि लेट्स से जैसे मेरे साथ ये हुआ कि व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ दैट टर्मोइल ऑफ सिचुएशन जब मेरे ऊपर आ गई, तो अब तो मुझे खौफ और डर था मरने का. उस खौफ और डर की वजह से फिर मेरे बाकी जिबिल्ली चीजें जो थी वो बंद हो गई, और मुझे सिर्फ ये था कि मैं किसी तरीके से अपने आप को बाहर निकालूं, बिकॉज हर वक्त आपको ये खौफ रहता है कि आप किसी वक्त भी जो है, जब व्हेन you are diagnosed with heart disease, when you are diagnosed with diabetes type 2, when you are diagnosed with कि आपकी 90% से ज्यादा जो ब्लड की आर्टरीज हैं ब्रेन की और हार्ट की जो है वो क्लॉग हो चुकी हैं, तो जाहिर है एक खौफ होता है, एक डर होता है. उस सूरत हाल में आपकी जो जिबिल्ली चीजें हैं वो सारी वो बंद हो जाती हैं और आप एक्शन करना चाहते हैं. यू वांट टू डू समथिंग टू गेट आउट ऑफ इट. लेकिन अगर लेट्स से ऐसा कुछ नहीं हुआ किसी के साथ, और उसको ये कहा जाए कि जो तुम्हारी खाने की आदत है, जो तुम अपने आप को सेल्फ इंजर कर रहे हो, उसको ना करो, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ही हैज नॉट येट सीन, शी हैज नॉट येट सीन इट, दैट डेंजर, दैट खौफ. तो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो इसीलिए फिर मैंने कुछ थोड़ा सा आप ऊपर की लगाई हैं और भी ट्वीट्स जिसमें मैंने इसी चीज को वाजे करने की कोशिश की. सो आई एम ट्राइंग टू मेक दिस आज की स्पेस जो लाइक अ की नोट, कि हमारे चीजों को समझने में आड़े क्या आता है, जब हम उस पर गुफ्तगू करते हैं तो हमारे आड़े क्या आता है, और जब हम उसको दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तो हमारे आड़े क्या आता है. कि अच्छा भला हकीकत के ऊपर जो काम हो चुका, मतलब हेल्थ के ऊपर, इन्फ्लेमेशन के ऊपर, देयर आर एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स, हकाइक हमारे बिल्कुल सामने हैं, लेकिन फिर भी हम उसको देखना नहीं चाहते. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मुझे जो दरपेश हुआ इस सफर में, जब मैंने कोशिश की आउट ऑफ माई सिंसियरिटी, पूरे खलूस के साथ, कि यार मैं दूसरों को भी ये बताऊं कि दिस इज हाउ इट इज. उसके लिए मैंने मेहनत की, किताब लिखी, रिसर्च किया, एंड बहुत सारे खाने जो है उनके भी मैंने रेसिपीज जो है वो शेयर की, वो सब कुछ किया. तो मुझे बहुत मुश्किल दरपेश आती है इस पे बात करते हुए, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने और डॉक्टर साहबा ने जो है मुझे इस बात का एक दफा फिर मौका दिया. हालांकि मैं कि दो चीजें जो हमने अपने खाने से निकालनी है अपनी गिजा से, एक फैट्स और दूसरा जो एनिमल बेस्ड पार्ट्स हैं, लाइक मे बी इट्स अ वाइट मीट और इट्स अ रेड मीट और एग्स और एक्सक्रीशन, दूध और उससे जो प्रोडक्ट्स बनती है डेयरी की, इन तमाम का हमें कुदरत ने टेस्ट बड ही नहीं दिया. सो अगर मैं आपको ना बताऊं दैट आई एम ऑफरिंग यू प्लांट बेस्ड डाइट, जो कि पानी में पकी हुई सब्जियां हैं या फिर वो ग्रेन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, राइस है,
اور میں آپ کو نہ بتاؤں کہ میں نے اس میں گوشت بھی نہیں ڈالا اور میں نے اس کے اندر جو ہے آئل بھی نہیں ڈالا یا گھی بھی نہیں ڈالا, بٹر بھی نہیں ڈالا, تو ٹرسٹ می آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا, بیکاز وی ڈونٹ ہیو دیٹ ٹیسٹ بڈ. دنیا میں قدرت نے جن جانوروں کو بنایا, جن کا یہ فوڈ ہے, وہ ان کو کارنیورس کہتے ہیں, اس قدرت نے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ بڈ بھی دے دیا ہے. تو اگر آپ ان کو سبزی کھلانے کی کوشش کریں گے, اگر آپ ان کو جو ہے بغیر کولیسٹرول کے چیزیں کھلانے کی کوشش کریں گے, وہ اس کو نہیں کھائیں گے, نہ وہ اس کو اسمیل کر سکتے ہیں, وہ ان کو اسمیل بھی کر سکتے ہیں اور ان کے پاس ٹیسٹ بڈ بھی ہے. میرے ایز انسان کے پاس ہے ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا. اٹ ہیپنس. تو آپ کی پہلا میں نے جواب دے دیا, ابھی آپ کچھ اور مزید دیکھ لیں. فرا کچھ کہنا چاہ رہی تو اس کے Thanks بعد so much. Yes, we would let Farah to speak and then, all right, perfect. Yes, please, Farah, go ahead. Thank you so much, Kiran. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, Dr. Sheila. I hope everyone is fine. Afzal sir, I heard you. To be honest, I felt that آپ جو ہے نا وہ جو انسان کی سائیکی جو ہے اس کو بہت اچھے سے اپروچ کر رہے ہیں. اور جب آپ بول رہے تھے نا جو ہماری مینٹیلٹی ہے, تو آئی ایگری کہ دیٹس واٹ وی تھنک. وی ڈونٹ لک ایٹ آور سیلوز. جب فوڈ چوائسیز کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو کھا رہا ہے, وہ تو موٹا بھی ہو گیا, وہ تو یہ بھی, اس کو تو کچھ نہیں ہو رہا, ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا. سو میرا بیسک کوشچن جو ہے نا وہ میٹ کی جو ہماری روٹینز ہے نا, جیسے آئی لیو اوورسیز, تو میرے پاس اتنے سارے کام ہوتے ہیں. گاٹ 4 kids. 2 کوشچن ہوں گے میرے اس میں. مجھے جو میٹ ہے نا وہ ایک آسان سمجھنے کے چوائس رکھتی ہے. آئی ڈونٹ کوک ایوری ڈے, ٹوائس اے ویک مے بی. لیکن ہمارے پاس الٹرنیٹیو کیا ہوگا؟ کیا پریکاشنری ڈائٹس ہے, یہ بچوں کے لیے بھی ہوگی؟ کیونکہ میں نے تو بچوں کے پرسپیکٹو سے دیکھا. کیا ان کے لیے بھی ایسے ہی میٹ فری ڈائٹ ہونی چاہیے, یا یہ ایک پریکاشنری ڈائٹ ہے ان کے لیے جو 30+ ہیں, 40+ ہیں, کہ جن کے تھوڑے بہت اب آثار نظر آ رہے ہیں کہ دے کین ڈیولپ ٹائپ 2 ڈائبٹیز, اور مے بی وہ ہارٹ ڈیزیز کی طرف جا سکتے ہیں, بیکاز دس از ایشین روٹین. ہمارے ایشین فوڈ ہوتے ہی ایسے ہیں, جتنا بھی اوائڈ کریں ہم نہیں کر سکتے. میرے ہسبینڈ کو ڈائبٹیز ہے, لیکن میں نے فوڈ سے بہت عرصے سے مینج ان کی ہیلپ کر رہی ہوں کہ میں وہ مینج کریں, اور ہی از فائن ان اے وے. ان کے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ٹھیک آتے ہیں, بٹ وہ ختم تو نہیں ہوتی ہے. اور میٹ وہ بہت لیس کھاتے ہیں. اسٹل آئی ایم انٹرسٹیڈ ٹو نو کہ کیا ایسے کیسے پاسبل ہے کہ بالکل آپ میٹ فری ڈائٹ کھا کے تو یہ اچیو کر لیں. پلیز, تھینک یو. جی بہت شکریہ. دیکھیے میرا فوکس جو ہے فوڈ کی بارے میں سائیکالوجی پر نہیں ہے. میرا فوکس جو ہے فوڈ کے بارے میں ایڈیکویٹ انفارمیشن جمع کرنا, اس کے بعد اس کے اوپر ایڈیکویٹ پرسیپشنز بنانا, یعنی کہ معقول سوچنا, اور دین اس کے بارے میں معقول بات کرنا اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنا, ایک ایسے فوڈ کی رجیم کو جو ہماری ایڈیکویٹ سوچ پر مبنی ہو, ہمارے پرسیپشن پر مبنی ہو. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ بچوں کے لیے جو ہے رجیم کیا ہو, اور جو باقی ایڈلٹ ہیں گھر میں ان کے لیے رجیم کیا ہو. ایکچولی اس کے لیے تھوڑی سی پھر ہمیں سوچ کا ایک پارٹ ہوتا ہے, اس کو آئیڈیا کریٹیوٹی کہتے ہیں, کہ وی ہیو ٹو ہیو این آئیڈیا کریٹو اپروچ ٹورڈ فوڈ. اباؤٹ یور کڈس, اس وقت دنیا میں اور خاص طور پہ امریکہ میں 17 سال سے کم بچے ہیں, بہت سے ہیں جو کہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 کا شکار ہیں, اوبیسٹی کا شکار ہیں, اینڈ سو آن. اور اگین یہ دس ڈیٹا از اویلیبل. آپ صرف سرچ کریں امریکہ میں, برٹن میں, ویسٹرن سوسائٹیز میں, ایسٹرن سوسائٹیز میں, پاکستان میں, انڈیا میں کتنے بچے جو ہیں وہ, اگر ان کو لیٹ سے ہم 2 چیزیں ایڈ کر رہے ہیں ان کی فوڈ میں, ایک فیٹس, سیکنڈ اینیمل پارٹس یا ان کی ایکسکریشنز اور انڈے, تو اب ان کے پاس کیا وہ ہے, ڈیٹا کیا ہے کہ وہ کتنے ان میں سے بچے جو ہیں وہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 کا شکار. سو اس کو اس طریقے سے اپروچ کرنا ہے ہم نے. میں آپ کو ایک کہانی چھوٹی سی سناتا ہوں. There is a lady, her name is Miriam Lanswood, and her boyfriend, اس کا نام جو ہے Michael. Both of them, they are from New Zealand. They decided to live in jungles.
and they kept on living for 7, 8, 10 years very successfully. And both of them, they used to eat only vegetables and fruits, जो भी उनको जंगल से मिलते थे. लेकिन उनको भी यही दरपेश था मसला कि ये जब हम ये चीजें खाते हैं जिसके अंदर वेजिटेबल, फ्रूट्स और ग्रेन्स होते हैं, तो इट इमीडिएटली वो हजम हो जाती हैं हमें, और फिर हम ज्यादा वक्त उसमें नहीं गुजार सकते. तो उन्होंने ये कहा अब क्या किया जाए, एंड बोथ ऑफ देम दे डिसाइडेड टू चेंज फूड टू, उसके ऊपर जो है उसमें एनिमल, उन्होंने हंटिंग स्टार्ट कर दी. जब उन्होंने हंटिंग स्टार्ट कर दी तो पहले उसने तीर और कमान से हंटिंग की, बिकॉज माइकल इज 75 years एट दैट टाइम एंड लैंसवुड मरियम वाज अबाउट 35 years old. तो जब उसने हंटिंग शुरू की, फिर उसने राइफल ले ली, तो इट वाज ओनली 1.5 year कि माइकल को जो था उसके किडनीज फेल हो गए, बिकॉज जो इसका असर है 17 years से नीचे तक इस फूड का, जिसके अंदर फैट्स होते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स होती हैं, उससे पहले इंसान के आर्टरीज के अंदर एक मॉलिक्यूल पैदा होता है जिसको कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, और वो उस इंजरी को हील करता रहता है. 17 years के बाद उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है. सिर्फ इस सूरत में पैदा होता है जब हम लीफी ग्रीन जो है वो खाते हैं. जिसने ये इन्वेंट किया इस रियलिटी को, जो इस हकीकत को फाइंड आउट किया, उसको नोबेल प्राइज मिला इस बात के ऊपर. सो नो जी किरण साहब. Thank you so much, Sir Afzal, for responding. I would come on to the food groups as well, but before that, I want to share something that it's a famous saying that eat like a king, and in the morning, like breakfast like a king, and then your lunch supposed to be sort of a PM, and then of course night's meal would be a sort of a beggar. And we do have our body eating time or patterns as well, that we're not supposed to eat off timing. Like suppose when my child, he was up to like searching of eating proper schedules and time, and he came up to this conclusion that he's supposed to finish up eating by 5 o'clock in the evening, or you can say not later than 7 o'clock in the evening. So your thought on eating sort of this, please go ahead, Sir Afzal. बहुत शुक्रिया. दुनिया में दो चीजें ऐसी हैं जिनका टाइम गलत नहीं हो सकता. एक स्विस ट्रेन्स और दूसरा इंसान का सर्केडियन रिदम, अगर वो प्लांट बेस्ड डाइट पर होगा. आई से अगेन, ये इतना नेचुरल, इतना करेक्ट है कि अगर आपने सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट को अपना फूड का हिस्सा बना लिया, और अगर आप मजबूरी में रात की ड्यूटी नहीं कर रहे, यूजुअल एक लाइफस्टाइल है जो बच्चों का है और बड़ों का है, जो कि आई थिंक 99% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड दे हैव. इफ दे जस्ट शिफ्ट टू प्लांट बेस्ड डाइट, उनका सारे का सारा निजाम जो है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, वो कन्वर्ट हो जाएगा, स्विस ट्रेन की तरह इतना एक्यूरेट हो जाएगा. एंड दिस इज नॉट अगेन आई एम सेइंग इट इज द पीपल हु हैव वर्कड ऑन इट. They have shared, and most of them, they are doctors. So what we have to eat for the first part of the day before 10 o'clock or so Pakistan time, या सारी दुनिया में, यहाँ नॉर्वे वगैरह में होता है कि वो थोड़ा सा, लेकिन क्लॉक तो वही है. तो सुबह 10 बजे तक जो है, आपने पहले जब सुबह आपको आंख खुले, आफ्टर हैविंग इनिशियल हाइजीन रूटीन, उसके बाद अगर सिर्फ फ्रूट्स खाए जाएं, जस्ट फ्रूट्स, जितना भी खा सकते हैं, and they will get consumed by 10 o'clock or so, and have another session of fruits. जितना खा सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, मार्केट में जो अवेलेबल है फ्रेश फ्रूट्स. उसके बाद जब आपको भूख लगना शुरू हो जाए, तो आप सैलड खाना शुरू कर दें. लाइक माई वेट इज अबाउट 90 kilos, तो 90 किलो में मीन 900 grams ऑफ सैलड मेरे सामने होना चाहिए, वेजिटेबल सैलड कच्चा, और मैं उसको खाना शुरू कर दूं. जब मेरा बिल्कुल पेट भर जाए, तो उसके बाद मुझे रोटी या चावल किसी भी फॉर्म में, ब्रेड है और व्हाटएवर, जो भी कल्चर है, और उसके साथ पानी में पका हुआ वेजिटेबल्स विद अ लॉट ऑफ स्पाइसेस जो मेरी पसंद के हैं, विद सॉल्ट, जो भी मुझे पसंद है, और या फिर जो लेग्यूम्स हैं, जो ग्रेन्स हैं, जो दालें हैं, वो भी पानी में पकी हुई बगैर तड़के के.
So I can have as much as I like. 4 o'clock again, have another session of fruits. क्योंकि तब फिर भूख लग जाएगी 4 बजे. ये करीबन 1 बजे आपने लंच कर लिया, 4 बजे फिर आपको भूख लग जाएगी. और by 7 o'clock or so, again one start feeling hungry. Again, fresh जो vegetable salad है, leafy greens, जो भी salad में हो सकता है उस वक्त, वो सारे का सारा. मेरे लिए 900 grams, someone is 60 kilo, so 600 grams वो कटा हुआ उनके सामने for every individual in the family उसके पास होना चाहिए. और उसके बाद जो वो जितना चाहे उसको वो खा ले. आफ्टर दैट चावल पानी में पके हुए, ब्रेड पानी में पकी हुई, और उसके बाद दाल या जो वेजिटेबल है वो पानी में पके हुए विद लॉट ऑफ स्पाइसेस, गुड गार्निशिंग एंड एवरीथिंग. ये बेसिक रूटीन है इसकी फूड की, ये रिजीम है. इसके अलावा जब भी दरमियान में चाहें फिर अगेन वन कैन हैव मे बी पीस ऑफ ब्रेड, मे बी some vegetables, some fruit, some salad. तो दिन में ये 6-7 दफा खाएंगे तो फिर कहीं जाकर आपकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज है वो पूरी होंगी. मेरी एज में मुझे 1600 से अबाउट 1800 कैलोरीज चाहिए. बच्चा होगा तो उसको 2200 कैलोरीज चाहिए होंगी, एंड सो ऑन. So that's how this has to be adjusted creatively. It is hardly anyone can avoid not sleeping at 11:30 because that is the time जिसमें कि biological clock जो है वो इतना जो है alertness को कम कर देता है that sleep naturally comes. It takes over and then one is going to wake up early in the morning before जो है फजर तहज्जुद का जो वक्त है, और वो आपने वो 6-7 घंटे 11:30 हुए तो आपने 6-7 घंटे पूरे कर ली. इस तरह दोपहर को भी जब आप लंच करेंगे थोड़ी सी नींद आएगी. हेल्थ जो है मैं जैसा ये कह रहा हूँ कि अगर हमने अब सेल्फ इंजरी को अवॉइड कर दिया तो दैट इज मच बेटर कॉन्सेप्ट. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर नॉट लुकिंग फॉर हेल्थ, वी आर लुकिंग फॉर अवॉइडिंग सेल्फ इंजरी थ्रू फूड. तो ये जो उसके साथ बायोलॉजिकल ह्यूमन क्लॉक है ये खुद ब खुद एडजस्ट करता है और इतना ही एक्यूरेट हो जाता है जितना कि एक स्विस ट्रेन हो सकती है. सो दैट्स हाउ I approach to it. Which I want to put up here is something if people they have seen the food pyramid, and if I would like to share here that the biggest part or the lowest part is always like for grains and cereals. That means that in your daily routine you can eat the most of grains and cereals. Then comes up the fruits and vegetable parts which you can eat more as much as possible. After that comes up like on the lowest level, on the lower level you can say meat comes, poultry comes, and fish, eggs, and dry beans, and of course along with the dairy products, and the least part which is fats and oil. So that is always a sort of a group, pyramid group of food, which we can also, you can Google and you can find out about it, and where they have mentioned about grains and cereals, which is the most edible part, or you can eat in your daily life, in your routine life, or in your diet, you can add up. So your thoughts on that, is it a good way that we have to skip it up this way, that the most part supposed to be grain and cereal? The other question which I want to put up that if for the grains, we always say, and I think Farah's sister also put up one question for especially children, is something that if we talk about grains, they are like a sort of a low protein, right? But when we in considering children, which of course they for their good health, they always need high proteins. So if by skipping any group of food or any class of food, do you think that could be children especially, they could have any bad impact or bad effect on their health? Or no, if we're just going to skip up this class, this group, so still children and a lot more people, adults, we can survive. So your thought on this food pyramid, and that is exactly the way we should follow, and skipping up any food group would be a good idea, or it depends on the
age group, group ages, like suppose children, they cannot, or they're not supposed to skip it, or 20 to 30 they can skip. So what would be your thought on that, to bring up this question in front of you on the table? So Afzal, go ahead. Thank you very much. As far as I am concerned, and my belief about food is zero oil, zero animal parts, zero animal excretions, and zero animal acts. They are not our food. Whenever we are going to eat it, they are going to injure our, arteries. They are going to injure our, this digestive system, and they are going to cause inflammation. That is another kind of injury. That is the home to all other diseases, 26 diseases, including cancer, heart disease, stroke, arthritis, diabetes type 2, obesity, blood pressure, and so on. So for me, there is no point in adding any kind of fats or any kind of animal parts, animal secretions, or animal eggs into our food. I do see a sort of a good, healthy plate, which is supposed to be taken in our, as sort of a diet in our daily life. And that good plate, if I would say, a big inclusion is of vegetables, like your greens, it's supposed to be there, and then comes up as it's a sort of a pyramid, but it is in a form of a plate. That after that comes up fruits, and then there's supposed to be grains portion as well, and the least portion is that is the protein, and of course a little bit dairy can also be included. So a good plate, sir, if you say so, that is a good plate where you can always have inclusion of vegetables, fruits, grains, proteins, and dairy. Or because it is very difficult for all of us, because we are listening, and we do respect your thoughts as well, but it will be taking a lot more time for understanding that say zero or say no to meat or protein, high protein, which we can get always from meaty items. So if considering that good plate, in our mind, your thought on that if it's fine that we're skipping protein and dairy too, and we would live a healthy life. So your take on that, please go ahead. Yeah, you see, I will give an example. Let's say if the requirement is to fill a bucket with the water, and if we try to make a hole, at the bottom of it, we are never going to fill it. So if we claim to avoid self-inflicted injury to our body, for that we have to close that bucket so that it can fully fill. Addictions. So we have to work on our addictions about food. These are the areas which we may spend some time, a lot of time, study, efforts, innovation, idea creativity, and that's how the human phenomena is going to work without self-inflicting injury of inflammations. Thank you very much. Thank you so much. I'm going to put, I think, last two questions. After that, I would ask from the speakers if they have any questions so they can ask. One thing, when we add sort of those spices in our Pakistani dishes, and though I do believe that all those spices have their particular properties in regards for health side. So do you think that those spices are good to be added in our Pakistani dishes, or maybe, other dishes as well, like whatever you cook, but spice is supposed to be added? And that's good, that there's no harm in it. And the other question which I want to ask about, suppose people, when they always go on reducing their weight, and they do some research, and they find out about different diet, and the diet would be you can say vegan diet, and there are a lot of protein diet. So do you think that we should go on a sort of diet plan, or we should
eat healthy. So your take on these questions, and then I would ask my speakers if they have anything to share or ask, so they can do. Thank you very much. When it comes on to spices, actually spices, they have a lot of minerals, they have a lot of nutrition, they have a lot of vitamins, and we have taste buds for them. There is no spice which we cannot smell, which we cannot taste, and which we cannot. So if nature has made it for us, and they are grown through, we get them through plants, so they are our food. They are not going to bring any negative impact on our health. They are not going to cause any injury, self-inflicted injury. But otherwise, when it comes on to vegetables, when it comes on to fruits, when it comes on to grains and legumes, there is a system in the nature that when we are eating it, we can maximum delay our eating for 2.5 minutes. Then a message comes that the tummy is filled, and there it goes. We cannot eat anymore. It is going to make us sick.